Welcome everyone. This is the first day of the daily drill that we are planning to run for this entire season. So today is the first day. I thought we'll start with a relatively easy area, which is reading comprehension. And of course, we will move on to arithmetic and then data interpretation and then verbal ability and so on. So we have all the sessions lined up for this week and the coming week. We'll be running this for more than 100 days. So I plan to run this till roughly mid-November, till the time you are all set for the CAT, and that is basically the daily drill, right? So as many of you would have done already, there is a test that we generally float in the morning, and you are expected to take the test during the day. And once you are done taking the test, once you are done with the questions, in the evening we will just sit and discuss what all questions were there, what was the level of difficulty, the statistics that are there. So I have more or less data in terms of what all questions were easy, perceived to be easy rather, what all questions were perceived to be difficult, and so on. So I'll maybe discuss those questions a bit more. And otherwise, yeah, if there are any doubts, anything else, then of course we can discuss it. Right. So, first thing, I just wanted to tell you a few things for those of you who haven't taken it, or those of you who are watching the recording. Once you enroll for the program, you will also have to click on the confirmation mail. You'll have to confirm your email. Otherwise, you will not be able to take the test. So those of you who have not done that, please do it. I think there was a mail that was sent from our end as well to all the people who had signed up for the course. But those of you who haven't done it, please do it. Otherwise, you will not be able to take the tests. All right. And once you do it, once you get enrolled into a course, you will be able to see some it in this format. You just have to click on an individual test and you will be able to take the test, after which this is basically the interface. And after the test is done, you will essentially be getting a lot of insights, right? A lot of analytics and so on and so forth. So let's get going with the session. So the first thing, I'll just cover a few do's and don'ts when it comes to the RC side of things. Of course, more elaborate setups or more elaborate strategies and tips I will cover in a separate video. But for today's session and for RCs in general, there are a few things जो I wanted to discuss specifically. तो यहाँ पे what all things are there जिसपे हमें special attention देना चाहिए, right? So that is basically the first thing that we are looking at. तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे डिस्क्राइब समथिंग. सो एन एडजेक्टिव इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड एन एडवर्ब इज समथिंग दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब. तो अगर किसी ने कोई भी चीज की है तो वो कितनी इंटेंसिटी के साथ की है, या फिर हैज दैट पर्सन डन इट हैप्पीली के बीग्रजिंगली, तो एग्जैक्टली मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ब यूज किया गया है, दैट इज वन. एंड इन टर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स, अगेन अगर मैं किसी भी एम्परर की बात कर रहा हूँ, let's say, तो मैं अगर बोलता हूँ एक जेनरस एम्परर था, देन दैट एम्परर इज डिस्क्राइब्ड एज जनरस. तो एम्परर इंपॉर्टेंट नहीं है ये कॉन्टेक्स्ट में, जनरस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जनरस इज अ पॉजिटिव वर्ड, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट मोर वर्ड्स एंड उनका पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी वो हम लोग एक बार देख पाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. ठीक है. खुशी, यस, ऑल द टेस्ट आर फ्री. सो डेली ड्रिल के अंदर जो भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे फ्री होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो वी प्लान टू रन दिस फॉर दिस एंटायर सीजन. ठीक है. तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, नाउन्स एंड प्रोनाउंस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ सिनेरियोज इट विल सो हैपन कि एक आपको एक कोई तो एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा. लेट्स से मैंने मटेरियलिज्म की बात चालू कर दी एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट इज मटेरियलिज्म, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ठीक है. नाउ इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू नीड नॉट सीम लॉस्ट कि अरे मटेरियलिज्म क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इस पैसेज में दिया क्या है. Right, so we don't need to get stuck because you don't know a particular scientist's name or a particular principle. ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ठीक है. So that is why you should not focus more on the nouns. If you read a certain thing maybe for 2 minutes, you will figure out what it is about, more or less. उतना तो अपने आप को trust करना चाहिए. And in terms of the tone of the passage, adjectives and adverbs will be important. Then transition words. I'm sure ये आप सब लोगों ने सुना होगा कि transition words is very important. Now transition words essentially mean whenever there is a sentence that ends and another sentence that starts and this sentence is related to the previous sentence. ठीक है. तो अगर कुछ relation है previous sentence के साथ तो then that becomes important because ये additional information दी है आपके पास. ठीक है. तो but however although instead in fact ये मैंने कुछ transition words लिखे हुए हैं यहाँ पे. So whenever you come across these kind of words आपको बहुत carefully उस लाइन को पढ़ना पड़ेगा. तो जैसे ही कोई बोलता है however, इसका मतलब है कि अभी तक जो भी बोला था वो सब तो ठीक है, लेकिन so that is basically the meaning of the word, literal meaning of the word however. Similarly, अगर additionally कोई बोलता है in addition to, in fact is again something, ये सब है
एंड इनफैक्ट अगर मैं और थोड़ा डेप्थ में आपको बताने जाऊं तो फिर देन it will be a more elaborate discussion, right? So that is basically what additionally or in fact will tell you कि in addition to this these things are also true. तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, बाकी sentences को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, but these sentences you have to be extremely alert when it comes to these sentences. ठीक है? इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आरसी अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो मे बी इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, एक काम कर लेना, यू लुक एट दी क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लेना कि क्या पूछ रहे हैं. डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट क्वेश्चन. तो ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पूरा देखा हो, पूरा का पूरा पढ़ लिया, सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, ट्राई टू फिगर आउट विच ऑप्शंस आर गुड, विच ऑप्शंस आर बैड. ये सब नहीं करना है, राइट? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं, ये अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल हैं तो 1917 में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो you will simply go to that part of the passage where you will be more alert in that part of the passage जहां पे 1917 has been written, right? So that is more important. बट अगर क्वेश्चंस हैं, टोन क्या है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, इफ दिस पैराग्राफ वेयर टू और इफ दिस पैसेज वेयर टू कंटिन्यू, व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर ये सब पूछा जाए तो देन ऑफ कोर्स दीज आर इन्फरेंशियल क्वेश्चंस. तो यहाँ पे मतलब इफ द पैसेज इज डिफिकल्ट, इफ द क्वेश्चंस आर इन्फरेंशियल, डू नॉट गेट स्टक इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस और पैसेजेस, डू समथिंग एल्स इंस्टेड. तो वो एक क्लू मिल जाएगा आपको. देन सिमिलीज एंड मेटाफर्स, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आज हम लोग एक पैसेज में एक छोटा सा एक मेटाफर काइंड ऑफ अ थिंग देखेंगे. तो सिमिली या मेटाफर बेसिकली होता है सिमिली इज लाइक, तो एक चीज है इट इज लाइक समथिंग, ये बताए थे. एंड मेटाफर इज अगेन समथिंग सिमिलर, बट अगेन मतलब सिमिलीज एंड मेटाफर्स यू कैन से इज मोर और लेस सिमिलर टू ईच अदर. तो अगर मैं बोलता हूं कि ही हैज स्टडीड द सब्जेक्ट लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर, लेट्स से जो भी मतलब, तो आई एम सेइंग इट ही स्टडीज दैट सब्जेक्ट वेरी इजीली, दैट इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट. ठीक है, तो लाइक अगर जहां पे भी आ जाता है ना, तो ये समझ लो कि वो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको वो सिमिली दी जा रही है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट हाउ एग्जैक्टली टू लुक एट केसेस जहां पे मतलब एक चीज को बताया गया और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इट हैज बीन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, गाजा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टिल डी डे, डेफिनेटली वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट. सो वो हम डेफिनेटली करेंगे. ठीक है, एंड एनालॉजीज आर अगेन समथिंग विच, जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे होता है, you can also say that it is something similar to something that happens in some other case. So analogies are also very important. Or similes or analogies too important है because that will help you understand the entire subject of the passage in an easier manner, right? तो यहाँ पे मतलब बहुत easy तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि passage में exactly बोला क्या है. क्या चीजें अवॉइड करनी है, तो जो स्पीड से आपको रीड करने के लिए नहीं देंगी, वो 3 हैबिट्स जो मैंने आपको बताई थी इन अ शॉर्ट वीडियो एज वेल, यू हैव टू अवॉइड री रीडिंग. सो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इंप्लीमेंट दीज थिंग्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन, दैट यू डू नॉट री रीड एनीथिंग. आई एम श्योर ऐसा बहुत बार होता है दैट यू रीड समथिंग, देन सडनली यू गेट zoned आउट, एंड देन सडनली यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्टार्ट अगेन, एंड ये साइकिल चलते रहता है. And then by the time you know it, you have already spent 7 or 8 minutes reading the passage. और अगर पैसेज पढ़ने में ही if you have spent 7 or 8 minutes, then it leaves you very little time to answer the questions. ठीक है, तो 12-15 मिनट लेके अगर एक पैसेज सॉल्व करेंगे तो definitely you will not be able to perform to the best of your ability. इसके लिए री रीडिंग नहीं करना है, just go with the flow, keep on reading till the end. क्योंकि बहुत बार ऐसे होगा कि you will read the questions and you will again come back to the passage. ऐसे बहुत बार होगा. So don't reread. I'm sure you will be able to manage with the limited information that you would have gleaned. And if you get into the habit of not rereading something, I think at the end of it you should be fine. ठीक है. Similarly, जहां पे भी for example अगर दिया हुआ है, right? या फिर और दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये सिमिलीज, मेटाफर्स, एनालॉजीज के साथ में ही आएगा. बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करके अगर मैंने पूरा इलेबोरेट कर दिया और आपको कॉन्सेप्ट अगर पहले से समझ में आ गया है, देन देयर इज नो नीड टू पे वेरी और अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दैट फॉर एग्जाम्पल वाला. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट गेट स्टक इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अगर और आता है तो कुछ सब कुछ दिया हुआ है एंड देन दे से कि और समथिंग समथिंग समथिंग, तो वहां पे भी अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग समथिंग दैट इज बियॉन्ड दिस. Then nouns slash terms that you have no idea about, it's perfectly okay. Every year आरसी के अंदर you will definitely get one passage जिसका सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो क्या लिखा हुआ है. ठीक है, it could be a political subject, it could be something that is related to psychology or some philosophical concept, कुछ भी हो सकता है, but you will have no idea about that concept. तो जो भी नाउन या टर्म आपको समझ में नहीं आती है, let go of it. यहाँ पे vocabulary का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा.
You have to understand it contextually. Now this is a story that you have to tell yourself. जितना आप अपने आप को अच्छी stories बताएंगे, उतना you will do well when it comes to cracking the RC part. And RC is extremely important, as all of you know. It is 16 questions out of 24, so 2/3 of the test. अगर overall test के context में भी देखा जाए, it's a good 35-40% kind of a setup that exists. So that's definitely something you have to, or rather 25% of the test is RC. So definitely something that you have to be very good at or very confident about. ठीक है. एंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज दी होगी, अगेन इट इज समथिंग दैट इज एडिंग टू अ पर्टिकुलर थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज. अगेन यू कैन इग्नोर द थिंग्स दैट हैव बीन पुट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ब्रैकेट्स, ये सारी चीजें बहुत अगर इलैबोरेट कर रहे हैं एंड यू नो ऑलरेडी व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, you can let go of these things. Fine. So now we'll start with the passage. We'll start with the first passage that we had asked you in the morning in the test. So what I will do is I will just show you what the passage is. If you haven't taken the test, I would strongly suggest you take the test first, and then you can have a look at the solution that we'll discuss, so that you derive more benefit from it. And for those of you who want to solve along, perfectly okay. I will go at a slightly leisurely pace. तो आराम से ही सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व अलोंग एज वेल. बट ऑफ कोर्स वो टाइमर के अंडर टेस्ट देना, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. ठीक है. सो बोथ द पैसेजेस आर फ्रॉम कैट 2017. तो अगर फर्स्ट चीज देखा जाए, राइट, सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट पैसेज, understanding where you are in the world is a basic survival skill, which is why we, like most species, come hardwired with specialized brain areas to create cognitive maps of our surroundings. So now if you have read the entire passage, you know that we are talking about maps यहाँ पे. ठीक है. और पूरे पैसेज के अंदर मैप्स और नॉर्थ, ये दो चीजें हमेशा आती रहेंगी. Right, so that this is something that we have to be careful about when it comes to this particular passage. यही मतलब इस पैसेज का पूरा essence है, so to say. Now humans are unique with the possible exception of honeybees and so on and so forth. तो long history of drawing maps, 14,000 ago cave के ऊपर कुछ maps बनाए हुए थे, and human cultures have been drawing them on stone tablets, papyrus, paper and now computer screens ever since. तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ का पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ. ऐसी राइटर की क्या मजबूरी थी दैट दिस पर्सन हैड टू सिट एंड राइट एन एंटायर पैसेज, जो गलती से आपके कैट में भी आ जाता है, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द पेन दैट दिस राइटर हैड that needed to be alleviated. और यहाँ पे the point of this passage is essentially that the author desperately wants to tell you कि भाई मैप मेकिंग हुआ कैसे, एंड हम लोग बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट है. ठीक है. सो हनी बीज का एग्जांपल दिया हुआ है, अगेन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ हनी बीज. ये एक अगेन एनालॉजी और एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ अ थिंग, ये अगर दिया हो तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, राइट. बट यहाँ पे बताया क्या गया है दैट लॉन्ग हिस्ट्री है. हम लोग पहले केव के ऊपर मैप्स बनाते थे, फिर स्टोन टैबलेट पे बनाना चालू कर दिया, ऐसे कर करके टुडे वी हैव बीन मेकिंग मैप्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन्स एज वेल. तो ऐसे बहुत सारे मैप्स है जो हम बना रहे हैं. फेयर इनफ, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ व्हेन आई शो यू द पैसेज अगेन, आई विल शो यू व्हाट ऑल थिंग्स वेयर देयर दैट यू हैड टू रीड. ठीक है. तो वो एक पार्ट आएगा आफ्टर मे बी 5 मिनट्स वंस आई फिनिश दिस वन, and then we will basically be looking at the questions as well. ठीक है. तो given such a long history of human map making, it is perhaps surprising that it is only within the last few hundred years that North has been consistently considered to be at the top. अभी यहाँ पे हम एकदम पॉइंट पे आ गए हैं. तो मैप्स वाज अ वेरी ब्रॉड टर्म. अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये लास्ट 100 years में ही कुछ ऐसे फ्यू 100 years में हुआ है दैट नॉर्थ को हम सबसे ऊपर रख रहे हैं. ठीक है. In fact, for much of human history, in fact, तो in fact का मतलब क्या हो गया? As I said, it's a transition word. तो ये तो हो गया कि नॉर्थ को हम टॉप पे कुछ 100 years पहले ही लेके आए हैं. In fact, मतलब और थोड़ा elaborate कर रहे हैं. For much of human history, North almost never appeared at the top. ठीक है. According to Jerry Broughton, a map historian. अब ये Jerry Broughton कौन है मुझे नहीं पता. Let's not get into the name of this person. ठीक है. तो let go of whoever this person is. ठीक है. Of course, credit मिलना चाहिए, but in our context, we are ruthless. We just want to solve questions. तो क्या बोलते हैं मैप हिस्टोरियन, नॉर्थ वाज रेयरली पुट एट द टॉप फॉर द सिंपल फैक्ट दैट नॉर्थ इज वेयर डार्कनेस कम्स. तो ये कुछ है नॉर्थ पे डार्कनेस, अगर आप ऊपर देखोगे आपको डार्कनेस दिखेगी. ठीक है. तो नॉर्थ से डार्कनेस आता है, इसलिए हम उसे कभी टॉप में डालते ही नहीं थे. वेस्ट इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली टू बी पुट एट द टॉप बिकॉज वेस्ट इज वेयर द सन डिसअपियर्स. सो अगेन कुछ सुपरस्टिशन होगा, कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस होगा, एंड वेस्ट इज वेयर द सन डिसअपियर्स, सो इट माइट नॉट रियली बी एन ऑस्पिशियस डायरेक्शन. ठीक है. तो उसलिए इसके लिए नॉर्थ और वेस्ट तो डेफिनेटली यूज नहीं करते थे. इसका मतलब साउथ और ईस्ट यूज करते थे, ऐसे ये बताना चाह रहा है.
आगे जाके अगर देखेंगे, कंफ्यूजिंगली अर्ली चाइनीज मैप्स सीम टू बक दिस ट्रेंड। मतलब क्या हो गया, बक दिस ट्रेंड, मतलब बक दिस ट्रेंड मींस दैट इस ट्रेंड को छोड़ दिया उन लोगों ने, मतलब इस ट्रेंड के अगेंस्ट हैं वो लोग। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट मींस। बट ब्रॉटन सेज इवन दो दे डिड हैव कंपासेस एट द टाइम, दैट इजंट द रीजन दैट दे प्लेस नॉर्थ एट द टॉप। तो कंपास था उस टाइम पे भी, बट देन अगेन इसकी वजह से उन लोगों ने नॉर्थ को ऊपर नहीं रखा था। अर्ली चाइनीज कंपास वर एक्चुअली ओरिएंटेड टू पॉइंट साउथ, which was considered to be more desirable than deepest darkest north। तो अभी मुझे समझ में आ गया कि अच्छा भाई ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट यूज नहीं करते थे, बट चाइनीज यूज टू डू दिस, ये मुझे पता है। बट वो क्यों करते थे अभी तक मुझे बताया नहीं, तो आई नीड नॉट गेट इनटू द स्पेसिफिक्स। अच्छा वो मोर डिजायरेबल देन डीपेस्ट डार्केस्ट नॉर्थ वगैरह, वो सब अभी इसमें बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। But in Chinese maps, the emperor who lived in the north of the country was always put at the top of the map। तो हमेशा emperor होता था ना, वो टॉप पे होना चाहिए, करेक्ट। तो मैप भी जब बनाएंगे तो emperor टॉप में हो, with anyone everyone else his loyal subjects looking up towards him। तो हमेशा ये होता था कि ऊपर टॉप में एम्परर है एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग अप, दैट्स व्हाई नॉर्थ बिकेम द टॉप। नहीं तो एम्परर को नीचे रखेंगे और अगर ऐसे दिखाएंगे जैसे मूवी थिएटर में स्क्रीन्स दिखाते हैं, देन दैट माइट नॉट रियली बी रिस्पेक्टफुल टू द एम्पायर एम्परर, राइट। तो ये होता। इन चाइनीज कल्चर द एम्परर लुक्स साउथ बिकॉज इट इज वेयर द विंड्स कम फ्रॉम। अब एम्परर हमेशा साउथ में देखने वाला है, क्यों? क्योंकि वहां से विंड्स आते हैं अपेरेंटली, एंड इट्स अ गुड थिंग, राइट। सो विंड्स कमिंग माइट मीन सम गुड omens for these people, and that's why emperor हमेशा साउथ में देखता था एंड उसको फेवरेबली देखता था, ठीक है। एंड एवरीबडी यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स द एम्परर, तो वो नॉर्थ की तरफ देखते थे, एंड बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द एम्परर इज ऊपर, तो डेफिनेटली नॉर्थ बिकेम दी डायरेक्शन जिसके जो डायरेक्शन में मैप्स बनते थे, ठीक है। एंड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द साउथ इट्स अ गुड डायरेक्शन। नॉर्थ इज नॉट वेरी गुड, बट इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ सब्जेक्शन टू द एम्परर, सो यू लुक अप, ठीक है। तो अभी अगेन ऑब्वियस है, एम्परर ऊपर है करके सब ऊपर थे। Then, given that each culture has a very different idea of who or what they should look up to, it's perhaps not surprising that there is very little consistency in which way early maps pointed. ठीक है, तो बहुत कम कंसिस्टेंसी, अगेन इट्स द सेम थिंग। इन एंशियंट इजिप्शियन टाइम्स, अब ये चाइनीज वाला खत्म हो गया, इजिप्शियन टाइम्स पे आ गए। इन इजिप्शियन टाइम्स द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाज ईस्ट। तो अभी हम जो ईस्ट बोलते हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड ईस्ट पे था उस टाइम पे। द पोजीशन ऑफ सनराइज, तो क्यों ईस्ट पे था? बिकॉज सनराइज, ठीक है। अर्ली इस्लामिक मैप्स, अब इजिप्शियन भी छोड़ दिया, अब हम इस्लामिक पे आ गए। तो नाउ बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग यू कैन से फॉलोअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोविंसेस देख रहे हैं, रिलीजन्स देख रहे हैं, एंड वहां पे हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन को फेवर किया जाता था। तो इस्लामिक मैप्स फेवर्ड साउथ एट द टॉप बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्ली मुस्लिम कल्चर्स वेर नॉर्थ ऑफ मेक्का। तो मेक्का अगर यहाँ पे, तो सारे कल्चर्स उनके नॉर्थ ऑफ मेक्का पे थे, तो डेफिनेटली दे इमेजिन लुकिंग साउथ, लुकिंग अप मतलब साउथ टुवर्ड्स इट। तो उनका अप मतलब डाउन हो गया अभी का, तो अभी मतलब ऑल्दो इट्स अननेचुरल फॉर अस टू इमेजिन हाउ दे यूज्ड टू डू इट, बट हाँ मतलब ऐसे होता था, ठीक है। क्रिश्चियन मैप्स ऑफ द सेम एरा कॉल्ड मैपा मुंडी, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। In fact, there is a nice video, एक बहुत ही 2-3 मिनट का क्लिप है मैपा मुंडी के ऊपर, so you can just search it. In fact, I'll put it in the description or in one of the comments. It's a very interesting video, so you have to look at it कि कैसे वो मैप बना था उस टाइम, ठीक है। मैपा मुंडी पुट ईस्ट एट द टॉप, तो वहां पे ईस्ट को टॉप में कर दिया फिर से, ठीक है। तो इजिप्शियन टाइम्स में ईस्ट टॉप पे था, इस्लामिक मैप्स में साउथ टॉप पे था, क्रिश्चियन मैप्स में ईस्ट टॉप पे हो गया बिकॉज ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन एंड विथ जेरूसलम इन द सेंटर। So when did everyone get together and decided north was the top? It's tempting to put it down to European explorers like Christopher Columbus and Ferdinand Magellan. अब tempting लिखा है, tempting is again a very important word here, right? It's tempting to put it down. तो कैसे put down कर रहे हैं हम लोग को tempt हो सकते हैं इसको put down करने के लिए, ठीक है। So again a very key word in this particular context. तो Magellan या Columbus के को हम लोग attribute कर सकते हैं maybe, but Breton argues that these early explorers did not think of the world like that at all। तो वो लोग ऐसे सोचते ही नहीं थे कि नॉर्थ ऊपर होना चाहिए। When Columbus describes the world, it is in accordance with east being at the top। अब इतना सुनने का जरूरत नहीं है, Columbus east at the top, यही मुझे बस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। He says, Columbus says he is going towards paradise। तो Columbus ने बोला भाई मैं पैराडाइज की तरफ जा रहा हूँ। His mentality is from a medieval mappa mundi। तो medieval mappa mundi जहाँ पे मतलब ईस्ट टॉप पे होता था, उस तरफ Columbus जा रहा है, is what he is saying, going towards paradise। We have got to remember at Broughton that at one time one knows what they are doing and where they are going, ठीक है। अगेन दिस इज समथिंग जिसका कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ब्रॉटन बेसिकली बोलता है कि उनको पता है कि उनको कहाँ जाना है और वो क्या कर रहे हैं, दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, विच इज अगेन ऑब्वियस, राइट। सो दे न्यू वेयर दे आर।
Now, if you are to look at it from the perspective of a test taker, अब ये तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है. Now, a lot of people will do it like this when they will read the entire passage for you. But पूरा passage पढ़ने के लिए आपके पास time नहीं होगा during the test, ठीक है. So what I have done here is I have marked a few words which are very important, and those are the words that you have to focus on. So whenever I do live mock solving sessions या जब भी मतलब I sort of look at questions, अगर कोई कुछ डाउट लेके आता है या फिर कोई कुछ अगर मॉक टेस्ट है जो मैं दे रहा हूँ, ऐसे इवन एक्चुअल कैट में मैं देख रहा हूँ, I will generally look at these words. So I'll read very fast because I'm looking at only these keywords that are there. ठीक है. So understanding value in the world is basic survival skill. Let go of it. Which is why का रीजनिंग मुझे नहीं चाहिए. I know that it is a survival skill. तो क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड ब्रेन एरियाज में दिखाई दिए. एंड यहाँ पे कॉग्निटिव मैप्स, अब ये कॉग्निटिव मैप्स आ गए तो धीरे धीरे स्पेसिफिक हो रहे हैं. तो सर्वाइवल से शुरू हो गए, हम लोग के पास हार्डवायर्ड है हमारे ब्रेन्स, एंड क्या करने के लिए, कॉग्निटिव मैप्स के लिए. नाउ आई नो दैट मैप्स इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ठीक है. अब ह्यूमंस आर यूनिक, वेरी गुड. हनी बीज वो छोड़ दो एक्सेप्शन, बिकॉज यू ट्राई टू कम्युनिकेट दिस अंडरस्टैंडिंग. तो मुझे मैप्स ड्रॉ भी करने हैं, मुझे मैप्स समझ में भी आते हैं. कॉग्निटिव इज टू अंडरस्टैंड इन अ वे, एंड कम्युनिकेट इज बेसिकली मुझे समझ में भी आ रहा है, मैं बाकी लोगों को बता भी रहा हूँ. ठीक है. तो दैट इज वन थिंग. वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस बाय ड्राइंग. अब ये हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि ऑब्वियस चीज है, ठीक है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ. इसके बाद यू नीड नॉट रियली गेट स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. देन given such a long history of human map mapping, it is perhaps surprising. Now this surprising is basically something that describes. ठीक है. मेरा एटीट्यूड क्या है, आई एम सरप्राइज्ड. व्हाई एम आई सरप्राइज्ड? बिकॉज ओनली लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स में कुछ तो हुआ है. क्या हुआ है? नॉर्थ वाज रेयरली पुट एट द टॉप. ठीक है. अब वो जेरी ब्रॉटन मैप स्टूडेंट, अगेन आई हैव स्किप्ड इट ऑल टुगेदर. नॉर्थ वाज एट द टॉप, डार्कनेस वहां से आता था. वेस्ट अनलाइकली था बिकॉज सन डिसअपियर्स. सो नॉर्थ डार्कनेस, वेस्ट सन डिसअपियर्स, दैट्स इट. देन कंफ्यूजिंगली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंफ्यूजिंगली मतलब चाइनीज मैप्स के अंदर कुछ तो हो रहा है, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज फॉर द राइट रीजन. तो कंफ्यूज है, वो सही काम भी कर रहा है बट सही रीजन के लिए नहीं कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे नीचे जो मुझे दिख रहा है, अर्ली चाइनीज कंपासेस वर एक्चुअली ओरिएंटेड, तो एक्चुअली वो साउथ पे पॉइंट कर रहे थे, विच वॉज मोर डिसाइडेबल. बट अगेन अ कीवर्ड, द एम्परर, उसके लॉयल सब्जेक्ट्स ऊपर देख रहे होते थे. तो एम्परर नॉर्थ में रहता था, लॉयल सब्जेक्ट्स ऊपर देख रहे होते थे. एम्परर क्यों साउथ में देख रहा था? बिकॉज विंड्स वहां था. So when you are reading it fast, you just have to read the emperor who lived in the north. Again, who lived is describing the emperor. I don't want it. With everyone else, loyal subjects looking up. So loyal subjects looking up is the phrase that I am looking. ठीक है. सिमिलरली विंड्स वहां से आते थे, इसलिए वो साउथ में देखा. दैट्स इट. उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं. देन गिवन दैट ईच कल्चर हैज अ वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ हु और व्हाट, अगेन बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है. अब हम आएंगे फिर से दूसरे इस पे, नाउन पे. इजिप्शियन जो है वो ईस्ट की तरफ देखते थे क्योंकि वहां पे सनराइज होता था. इस्लामिक साउथ में करते थे क्योंकि मक्का का कुछ कॉन्टेक्स्ट है. क्रिश्चियन मैप्स ईस्ट को टॉप में रखते थे क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन एंड जेरूसलम. सो व्हेन डिड एवरीवन गेट टुगेदर? तो इट्स टेम्पटिंग. अगेन एज आई सेड, टेम्पटिंग इज द वर्ड दैट आई एम लुकिंग एट हियर. तो टेम्पटिंग है. क्या टेम्पटिंग है? टू पुट इट डाउन टू यूरोपियन एक्सप्लोरर्स लाइक कोलंबस एंड मैजेलन. तो अगेन इट इज टेम्पटिंग टू डू दैट, बट इट इज नॉट ट्रू. जब भी मैं बोलता हूँ कि इट इज टेम्पटिंग टू डू समथिंग, इट मीन्स दैट इट इज रॉन्ग. ठीक है. But Britain argues that explorers did not think of the world at that at all. Columbus ने ईस्ट बीइंग एट टॉप को बताया गया है. दैट्स इट. एंड देन आई डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एल्स, राइट? क्योंकि आई नो कि इसके बाद क्या आने वाला है. कोलंबस ने बोला कि ईस्ट को टॉप पे रखना है. दैट्स इट. देन आई एम नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट इज इट. अब सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस, वी विल मोर और लेस बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. So the first question is which one of the following best describes what the passage is trying to do. तो ये एक इन्फरेंशियल क्वेश्चन है. ठीक है. इसके अंदर मतलब पैसेज आपको मोर और लेस अगर एक रीडिंग ग्लांस भी कर लिया है तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज पूरे पैसेज के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. तो पैसेज में हो क्या रहा है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट. सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द आंसर, एंड ऑप्शंस अगर उसके साथ अलाइन करते हैं देन ग्रेट, गुड फॉर यू. तो पैसेज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरे पैसेज के अंदर हमको ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ जो था, तो नॉर्थ को मैप्स में हम बहुत रिसेंटली करना चालू कर दिए हैं कंसीडर. ठीक है. वन. एंड द सेकंड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो नॉर्थ नहीं है. सो देयर आर सम कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स लाइक चाइनीज, जहां पे नॉर्थ ऊपर है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम ज्योग्राफिकल रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द एम्परर्स पोजीशन. लेट्स से हमें बताया गया कि साउथ भी फेवरेबल डायरेक्शन था, ईस्ट भी फेवरेबल डायरेक्शन था बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस. वी आल्सो नो दैट मैजेलन एंड कोलंबस आल्सो माइट हैव गॉन टुवर्ड्स द ईस्ट. तो ये बताया गया है. बट फाइनली कुछ कंक्लूजन नहीं है इसका. नॉर्थ आया कहां से वो बताया ही नहीं है. एवरीबडी इज कंफ्यूज कि आया कब और क्यों आया, बट दैट हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड इन दिस पैसेज. ठीक है. तो पैसेज करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन. नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव हियर,
इट क्वेश्चंस एन एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ मैप्स आर डिजाइन्ड, ठीक है। इट क्वेश्चंस एन एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है कि मैप डिजाइन कैसे हो रहे हैं, वो तो नहीं बताया गया है। मैप डिजाइन हो रहे हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया था कि दिस इज हैपनिंग, राइट। बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ मैप्स आर डिजाइन्ड, इट्स अबाउट वन पर्टिकुलर फीचर दैट नॉर्थ आया कैसे, दैट इज द क्वेश्चन, और दैट इज व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर। सेकंड, इट करेक्ट्स द मिसकंसेप्शन अबाउट द वे मैप्स आर डिजाइन्ड, ठीक है। सो अगेन कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैप को डिजाइन हम जैसे करते हैं ना, उसमें कोई तो एक चीज है जो हमको लगता है कि बहुत ऑब्वियस है, या फिर हमको लगता है कि सही है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, और दैट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग दैट इज वाइड स्प्रेड, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन, अगेन इट लुक्स टू बी अ बेटर ऑप्शन, तो इसको साइड में रखते हैं। थर्ड ऑप्शन, इट क्रिटिक्स अ मेथोडोलॉजी यूज टू क्रिएट मैप्स। अब एक मेथोडोलॉजी है टू क्रिएट मैप्स, अब ये हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ में जो हम नॉर्थ को ऊपर रख के मैप बनाते हैं, वो एक मेथोडोलॉजी है। डज इट क्रिटिक इट, डज इट से कि अरे नहीं ये तो मतलब अच्छा है कि बुरा है मुझे पता नहीं करके। इट डज नॉट से वेदर नॉर्थ इज अ गुड वे टू रिप्रेजेंट अ मैप और अ बैड वे टू रिप्रेजेंट अ मैप, नो। द पैसेज टेल्स अस दैट देयर आर वेरियस डायरेक्शंस दैट आर अवेलेबल, उसमें से नॉर्थ इज फेवर्ड एंड अदर पीपल यूज टू फेवर अदर डायरेक्शंस एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, और वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्रिटिक्स ऑफ मेथोडोलॉजी, वो नॉट क्रिटिक नहीं कर रहा, क्रिटिक का मतलब क्या हो गया, उसकी अच्छी और बुरी बातें बता रहा है, जैसे मूवी को क्रिटिसाइज करते हैं मूवी क्रिटिक्स जो होते हैं। सो इट क्रिटिक्स मतलब एक मेथोडोलॉजी की अच्छी और बुरी बातें बता रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे दे आर नॉट सेइंग गुड और बैड थिंग्स अबाउट दी अबाउट नॉर्थ बीइंग द राइट वे टू रिप्रेजेंट अ मैप ऑफ नॉर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग कि अच्छा मतलब ये चार ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसमें से ऑप्शंस यूज होते थे बस। फोर्थ, इट एक्सप्लोर सम मिथ्स अबाउट मैप्स, ठीक है। तो कुछ मिथ्स है मैप के बारे में दैट दे आर एक्सप्लोरिंग। नाउ मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ इज द ऑपोजिट ऑफ रियलिटी, मतलब ऐसी कोई चीजें हुई नहीं है, बट वी आर जस्ट सेइंग अच्छा ये कुछ माइथोलॉजी है, ये कुछ मिथ है ना, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब ये पूरे पैसेज के अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स दैट हैव बीन रिटन हियर, दैट ईस्ट वाज फेवर्ड बाय क्रिश्चियंस बिकॉज गार्डन ऑफ ईडन एंड जेरूसलम था, या फिर साउथ इज फेवर्ड बाय पीपल हु यूज्ड टू बाय मुस्लिम्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस कुछ था। चाइनीज यूज्ड टू फेवर नॉर्थ बिकॉज उसका कुछ सिग्निफिकेंस था। ऑल दीस आर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस, ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में बोल रहे कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता था करके। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज कहीं पे आपको दिखाई नहीं देंगे पैसेज के अंदर। तो मिथ्स अबाउट द मैप्स इज आल्सो नॉट राइट, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी व्हिच वाज सॉर्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैड अमंग द फोर, that is basically going to be the right option here, the right answer here in this particular case, ठीक है। So okay, just give me a second. Yeah, so I just click the pen. All right. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना, दैट इज बेसिकली दी करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज दैट एक्सप्लेन्स व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू डू, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। नाउ द फनी थिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, राइट। सो अगर इफ आई लुक एट द एनालिसिस दैट आई हैव हियर, 56% of the people got it wrong, this first question. A lot of people got it wrong. In fact, people who got the highest marks in this particular test also got this question wrong, ठीक है। हाँ, तो people chose D. I think some people chose C as well, right? So C और D बहुत ज्यादा close थे, and D also a lot of people chose, but myth नहीं है। Myth is a very strong word, so to say. It's like when someone says that Mahabharata is mythology, let's say for example, right? So a lot of people take it as an offense because they firmly believe that it was reality. It's not a myth. So myth, mythology, ये थोड़ा carefully you have to use these terms. Fine. Ronak, quant courses. So courses we will start soon, but we will be having our first quant daily drill tomorrow, arithmetic. So stay tuned for that one. And courses we will launch in due course, so to say. Yeah. Khushi, yes, yes. A lot of people chose D, but I think I hope it clears the doubt that myth was not really the word that we were looking. Okay. All right. So let's go to the second question now. Early maps did not put north at the top for all the following reasons except. Okay. So in this particular context, if you're looking at it, early maps did not put north at the top. तो नॉर्थ उनको टॉप पे नहीं डाला था फॉर ऑल द रीजंस। तो नॉर्थ नहीं ऊपर डालने के तीन रीजंस हैं आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस दैट वी हैव, एंड वन ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट रीजन। सो देन लेट्स लुक एट दिस वन। तो यहाँ पे नॉर्थ वाज द सोर्स ऑफ डार्कनेस। सो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट नॉर्थ में क्यों हम लोग अर्ली मैप्स यूज नहीं करते थे, बिकॉज नॉर्थ वाज द सोर्स ऑफ डार्कनेस।
and north was the source of darkness, ये बताया गया है, right? It has been explicitly mentioned in the this thing, because यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, north was rarely put at the top for the simple fact that north is where darkness comes from. So north is where darkness comes from, ये हमें बताया गया है, that's why north was definitely not put on top. So A is correct. A was one of the reason why north was not put on the top. Second option, south was favored by some emperors. ठीक है, साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स. नाउ अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन दैट वी हैव हियर. साउथ वॉज फेवर्ड बाय एम्परर्स, इसके लिए हम नॉर्थ ऊपर नहीं डाल रहे थे, ऐसा थोड़ी है. इनफैक्ट चाइनीज मैप्स के अंदर कंफ्यूजिंगली द थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इज चाइनीज मैप्स हैड नॉर्थ एट द टॉप. तो साउथ वॉज फेवर्ड बाय सम एम्परर्स, यस अग्री, बट बिकॉज ऑफ दैट अर्ली मैप्स डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप, ऐसा तो नहीं है. In spite of that, north was put at the top. Why was north put at the top? Because the emperor was sitting at the in the north. Okay, so south was favored by some emperors is a factually true statement. It is true. I'm not saying it is false, but because of that, maps did not put north at the top. ये नहीं है. ठीक है. So B seems to be a contentious option. So B को हम अभी के लिए we can say that it is a favorable option for us. We can mark it. Third option, East and South were more important for religious reasons for some civilizations. Perfectly correct. Yes. ईस्ट जो था वो क्रिश्चियनिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, साउथ जो था वो मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डेफिनेटली से दैट सी इज करेक्ट. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डिड नॉट पुट नॉर्थ एट द टॉप, दे पुट ईस्ट एंड साउथ एट द टॉप, व्हिच इज फाइन. ईस्ट वाज कंसीडर्ड बाय सम सिविलाइजेशंस टू बी अ मोर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी बताया गया है. ईस्ट से सनराइज होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी बताया गया है. दैट्स व्हाई ईस्ट कैन बी अंडरस्टूड इफ इट इज पुट ऑन टॉप. तो द ओनली ऑप्शन जहां पे वी आर नॉट श्योर if it is indeed the right answer or the right of thinking is option B. South was favored by some emperors. Because of that, the maps did not put north at the top. ये सही नहीं है. ठीक है? That is the point of this. Yes, it is possible to attempt the test later. In fact, you can take the test at any point in time till November. But हाँ, मतलब take the test and then look at the session is what I would recommend. ठीक है? So that is the answer. Option B is the answer to the second question. In fact, question 2 also, 56% of the people got it wrong. A lot of people got this question wrong because South was favored by some emperors ना बहुत ज्यादा specifically दिया था. So factually the statement was right. ठीक है. And religious reasons, some people might not have been able to relate Muslims and Christianity या Islamic maps and Christian maps because they might not have thought of, क्योंकि यहाँ पे religion explicitly mention नहीं किया गया. ठीक है. एंड मेक्का, गार्डन ऑफ ईडन, जेरूसलम, नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू थिंक दैट दीज आर ऑल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस. फाइन, बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द स्टेटमेंट इज राइट, बट that was not the reason that north was not protected. Fine, let's look at the next one. According to the passage, early Chinese maps placed north at the top because Chinese maps ने north को top में क्यों रखा था? The Chinese invented the compass and were aware of the magnetic north, so they had invented the compass. ये वाला part सही है, but they were aware of the magnetic north and because of that they placed north at the top. ऐसा नहीं है. In fact, if you were to think of an answer without looking at the options, you will basically say that because the emperor was at the top and everybody wanted to pay their respects to the emperor, that's why they created a map जहाँ पे north was at the top. ठीक है. तो यहाँ पे कंपास है, इट हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, बट इसका ऑनेस्टली बहुत रिलेवेंस नहीं है. ऑप्शन 2, they wanted to show respect to the emperor. Perfect, right? Emperor ऊपर है, they wanted to show respect to the emperor. Great, that's why north was at the top. Third, the Chinese emperor appreciated the winds from the south. ठीक है. नाउ चाइनीज एम्परर अप्रिशिएटेड द विंड्स फ्रॉम द साउथ, अगर वहां पे लिखा हुआ है तो साउथ को टॉप में क्यों नहीं रखा? Right? Also, Chinese emperor appreciated the winds from the south. Might be a reason that Chinese emperor wanted to sit at the north, and that might be the reason that people wanted to put north at the top in terms of the maps. तो ये हो सकता है, right? So that was basically the reasoning in this case. तो emperor appreciating the winds from the south is one reasoning. उसके अगले वाला statement is respect to the emperor के लिए मैंने north में direction रखा, and that's why north became the direction. तो जो भी सबसे proximal वाला reasoning है ना, that is what you have to understand. Proximal is nearer वाला. तो जो भी सबसे पास वाला रीजनिंग है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सी इज राइट, बट बी इज द मोर प्रॉक्सिमल रीजन, सो टू से. ठीक है. सो बी इज समथिंग दैट वी आर कीपिंग इन माइंड. नाउ फोर्थ, नॉर्थ वाज कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल डायरेक्शन. तो ऐसा तो नहीं बोला है नॉर्थ वाज कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल डायरेक्शन. इट हैज मोस्टली गॉट टू डू विद द एम्परर सिटिंग इन द नॉर्थ एंड पीपल पेइंग रिस्पेक्ट टू द एम्परर. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज राइट. फन फैक्ट, 63% of the people who attempted this test got this question wrong. ठीक है. And most of these people said that C is the right answer because emperor appreciated the winds from the south. ठीक है. And again, the funny thing is both of them are right, but as I said, proximal reasoning is very important.
Fine. Let's move on to the next question. Fourth question देख लेते हैं. It can be inferred from the passage that European explorers like Columbus and Magellan, क्या किया इन लोगों ने, तो दे अगेन द assumption is that, पहले क्या बोला था उन्होंने कि the assumption is that इन लोगों ने नॉर्थ को ऊपर रखना चालू कर दिया था. ठीक है. So they started putting it at the top, right? Okay, Khushi, I'll just check it once if the answer has not been entered properly from our side, but the correct answer should be in this particular context. ठीक है. All right. ठीक है, चलो. तो टेस्ट का आई जस्ट चेक इट वंस. आई थिंक आई मस्ट हैव मिस्ड दैट. ऑलराइट. So it can be inferred from the passage that European explorers like Columbus and Magellan did what. ठीक है. तो वहां पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोलंबस एंड मैजेलन जो है वो लोगों का, हम लोग का प्रिजम्पशन है दैट दे हैड नॉर्थ एट द टॉप, बट देन अगेन उनके अपने हिसाब से दे हैड ईस्ट एट द टॉप. दे वेंट टू, बिकॉज कोलंबस का दिया हुआ है दैट गार्डन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स पैराडाइज और समथिंग एल्स, राइट? या सो कोलंबस डिस्क्राइब्स दैट ही इज गोइंग टुवर्ड्स पैराडाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इन दिस केस. तो यहाँ पे सेट द प्रेसिडेंट फॉर नॉर्थ अप मैप्स. ठीक है. तो उन लोगों ने नॉर्थ अप मैप्स का प्रेसिडेंट तो नहीं किया. इट इज एरनसली अज्यूम्ड दैट दे डिड इट, बट दे डिडंट डू इट. Navigated by the compass, again it has not been mentioned. Used an eastward orientation for religious reasons, yes, mappa mundi बोला गया है. And mappa mundi ऊपर भी एक जगह पे आया था, तो यहाँ पे Christian maps from the same era, mappa mundi and medieval mappa mundi. तो basically Columbus is going towards paradise, meaning there is some religious context, and that is basically why they used an eastward direction for religious reasons. So option C looks nice. Navigated with the help of early maps, not really, medieval maps बोला गया है, right? Medieval mappa mundi. So medieval mappa mundi ये वाला. Fine. So again, navigated with the help of early maps and used an eastward orientation. Used an eastward orientation is the more closer option that we have, and that's why option C should be right for this one. Okay. Let's look at the fifth question. Which one of the following about the northern orientation of modern maps is asserted in the passage? ठीक है. तो फर्स्ट वन, नॉर्थन ओरिएंटेशन मॉडर्न मैप्स में क्या है, क्यों है करके वो बताया है. तो ऑल द ऑप्शंस आर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर. तो व्हाई इज नॉर्थ एट द टॉप? तो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ. ये तो बताया ही नहीं है पूरे पैसेज का, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली नॉट. Second, biggest contributory factor was the role of European explorers. This is definitely not true because Columbus and Magellan went towards the east, तो भी wrong है. Was the influence of Christian maps? Christian maps भी east में ही बता रहे थे, तो वो भी wrong है. Biggest contributory factor is not stated in the passage. So as I mentioned earlier, the entire passage talks about east हो सकता था, south हो सकता था, recently north हुआ है, Chinese तो मतलब north में रखते थे and so on. But exactly उसका contributory factor क्या है ना, वो बताया ही नहीं है passage के अंदर. So funnily, the answer here is going to be option D, which is the biggest contributory factor is not stated in the passage. Right? So that will be the answer to this one. Question 5, option D. Last, the role of natural phenomena in influencing map making conventions is seen most clearly in which ones? So early Egyptian maps. तो early Egyptian maps में देखते हैं क्या क्या था. So early Egyptian maps के अंदर top of the world was east, position of sunrise. So Egyptian was sunrise. Is sunrise a natural phenomenon? Yes, it is. ठीक है. तो sunrise is a natural phenomenon. So that's why it was influencing the map making convention. Yes. Islamic maps के अंदर साउथ में करते थे because of the position of Mecca. It's not a natural phenomenon. It's a religious significance वाला point. Chinese maps के अंदर emperor के लिए करते थे. Again, those of you who thought that winds की वजह से ऊपर north आता, that is wrong. Emperor के लिए north में था. Emperor is not a natural phenomenon. तो वो चाइनीज मैप्स भी नहीं होंगे. क्रिश्चियन मैप्स आल्सो लुक्ड एट ईस्ट, but that was because of Garden of Eden and Jerusalem. So again, that is not something that is a natural phenomenon. तो यहाँ पे the correct answer has to be option A, early Egyptian maps, because that basically talks about a natural phenomenon. ठीक है. सनराइज के लिए वो लोग ईस्ट में करते थे. As simple as that. So that is basically the first passage. I hope all of you got the answers now. And of course, if there is some error, I'll just check once and I'll revert that error. So that should not be an issue. Right? So this was one. 5 was apparently the easiest question of the entire test. Right? So fifth question, the one that we did before this, has not been stated in the passage. It was a tricky one because it has not been stated in the passage. Choose करना थोड़ा difficult लगता है. But definitely a lot of you got it right. So I'm very happy about it. So that was the first passage. ठीक है. Now let's look at the second passage. अब second passage जो है ना, you try to do it using the methodology that I suggested earlier. So I will not read the entire passage. What I will do is I will show you the highlights.
So whatever I'm able to observe when I'm reading this particular passage, that is what we will go through, and then of course you will be able to do it in a faster manner as well. ठीक है, तो यहाँ पे I'll just show you the passage and what all things should have looked at. So I used a smartphone GPS. तो GPS लिखा हुआ है, ठीक है, to find my way through the cobblestone maze of Geneva's old town. Doesn't matter जेनेवा में क्या था कि कहाँ पे क्या था, how does it matter? In search of a handmade machine that changed the world more than any other invention. Suspense build up हो रहा है, मेरे को suspense नहीं चाहिए. I want to reach that place जहाँ पे मतलब I am going to get the to the point, right? अभी 13th सेंचुरी कैथेड्रल है, स्विस सिटी में है, लवली लेक है, डजंट मैटर व्हाट इट इज. आई फाउंड आउट और फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. क्या इंपॉर्टेंट चीज था? गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, सो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इज समथिंग दैट दिस ऑथर वाज फॉलोइंग. जीपीएस यूज करके वहां पे चला गया. फाइन. दिस वाज द इंटरनेट ऑफ इट्स डे. नाउ दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, दिस इज मेटाफर. इट वाज द इंटरनेट ऑफ इट्स डे. सो व्हेन आई एम सेइंग आज का इंटरनेट और उस टाइम का गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आर बेसिकली द सेम थिंग. तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ अ मेटाफर. अब मुझे अगर नहीं पता उसका इंपॉर्टेंस कितना है, आज का इंटरनेट मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है. आई नो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू दी, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर. ये मुझे समझ में आ गया, right? At least as influential as the iPhone. Now, iPhone has also entered this particular discussion. Said GDM, I don't know who this is. Director of Museum of Reformation. Doesn't matter. Toying with the replica of Johann Gutenberg's great invention. Doesn't matter. वही वही चीज बार बार दी हुई है, ठीक है. Before the invention of the printing press, it used to take 4 months. पूरा डिस्क्राइब किया प्रोसेस. अगेन नॉट इम्पोर्टेंट. 4 months, ईयर, सिंगल बुक करना है. 15th century यूरोप के अंदर वन प्रेस कुड क्रैंक 3000 पेजेस अ डे. आई डोंट नीड ऑल दिस डेटा पॉइंट्स. ठीक है, अब है डेटा पॉइंट्स, गुड डेटा पॉइंट्स. बेसिकली फास्ट हो गया चीज. ठीक है, बिफोर लॉन्ग एवरेज पीपल कुड ट्रैवल टू प्लेसेस दैट यूज्ड टू बी अननोन टू देम विथ मैप्स. ठीक है, तो मैप बना दिया बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. मेडिकल इंफॉर्मेशन फ्रीली क्विकली चला गया, डिमिनिशिंग द स्वे ऑफ क्वैक्स. अब क्वैक्स यू नो आर फेक डॉक्टर्स, राइट, जो फेक रेमेडीज पेडल करते हैं, दोस आर कॉल्ड क्वैक्स. तो वो क्वैक्स कम हो गए बिकॉज एक्चुअल मेडिकल इंफॉर्मेशन कुड बी सेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल. राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव ग्लीन्ड अभी तक. उसके अंदर जो बीच का ज्ञान दिया ना, उसको पढ़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू कैन स्किप ओवर दीज थिंग्स व्हेन यू आर रीडिंग. ठीक है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग इट, स्पेशली पीपल हु आर रीडिंग इट वेरी स्लोली, सो दैट यू स्टार्ट रीडिंग फास्ट एंड रीड टू द पॉइंट. क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हम लोग वापस आने ही वाले हैं पैसेज पे, सो डोंट वरी अबाउट. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस? प्रिंटिंग प्रेस ऑफर द प्रोसेस दैट टायरेंट्स प्रोस्पेक्ट्स दैट टायरेंट्स आर समवन जो बहुत ऐसे अत्याचारी होते हैं, डिक्टेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग, जो मतलब मेरा ही रूल सही है करके रूल करते हैं. दोस आर बेसिकली टायरेंट्स वुड नेवर बी एबल टू किल अ बुक और सप्रेस एन आइडिया. ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक बुक पूरा का पूरा बंद नहीं हो सकता था, एक आइडिया पूरा का पूरा सप्रेस नहीं हो सकता था, विच इज अ गुड थिंग. सो टायरेंट्स के अगेंस्ट भी हुआ. नाउ क्लेरिक्स के अगेंस्ट भी हुआ. सो मोनोपोली जो था क्लेरिक्स का ऑन स्क्रिप्चर, वो भी चेंज हो गया. नाउ एनीबडी कुड सिट एंड रीड रिलीजियस मटेरियल एज वेल. अभी इसके अंदर पैम्फलेट जो निकले, वहां से क्या हो गया? अमेरिकन कॉलोनीज रोज अप अगेंस्ट अ किंग एंड गेव बर्थ टू अ नेशन. सो अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इवन दैट वाज इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द पैम्फलेट्स दैट वेर मैन्युफैक्चर्ड एंड सेंट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंटिंग प्रेस दैट वाज इन्वेंटेड. ठीक है, अब ये सब तो तुम्हारे हो गए फायदे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के. नाउ question: in the summer of this 10th anniversary of the iPhone, has the device that is perhaps the most revolutionary of all time given us a single magnificent idea? iPhone ने आज तक कोई भी एक magnificent idea दिया है? ये question है. Nearly every advancement of the written word through new technology has also advanced humankind. टेक ने ह्यूमन काइंड को आगे बढ़ाया है. वेरी गुड. श्योर यू कैन से दैट दी आईफोन हैज चेंज्ड एवरीथिंग बाय पुटिंग द वर्ड्स रिकॉर्डेड नॉलेज इन द पाम ऑफ अ हैंड. अगेन ऑब्वियस स्टफ दिया हुआ है. इट रेवोल्यूशनाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. रेवोल्यूशनाइज मतलब पूरा चेंज ही कर दिया पर्सपेक्टिव. क्या किया रेवोल्यूशनाइज? वर्क, डाइनिंग, ट्रैवल एंड सोशलाइज, ये चार चीजें यहाँ पे चेंज कर दी. तो आईफोन ने कोई एक सिंगल मैग्निफिसेंट आइडिया कुछ दिया है, तो यहाँ पे बोला है कि ये सब चीजें तो की हुई है. इट मेड अस मोर नार्सिसिस्टिक. नार्सिसिस्टिक इज अ नेगेटिव वर्ड. ठीक है, नार्सिसिस्टिक इज बेसिकली समवन हु टॉक्स अबाउट देमसेल्व्स. ठीक है, और अगर एक्सप्लेन भी किया गया तो एज आई मेंशन डैशेस या ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीजें होती है ना, दोस विल एक्सप्लेन द वर्ड और अ फ्रेज और अ पर्टिकुलर फिनोमेना. तो यहाँ पे नार्सिसिज्म को बताया गया है. हियर इज मोर ऑफ मी डूइंग कूल स्टफ, मतलब एवरीथिंग इज अबाउट मी. आई एम द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. जो मैं कर रहा हूँ वो सबको देखना है करके मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ. ठीक है, सो हियर इज मोर ऑफ मी डूइंग कूल स्टफ. ये नार्सिसिज्म आ गया. And it unleashed an army of awful trolls. तो trolls भी बहुत सारे आ गए. We no longer have the patience. Patience नहीं है. Baseball game नहीं देख सकते to reach the pocket. Fine. Patience नहीं है. That is the main thing.
And one more casualty of Apple selling more than a billion phones in a decade's time. Daydreaming has become a lost, again very important, daydreaming has become a lost art. Lost art is again a slightly disappointing tone वाला था, ठीक है. For all of that I'm still waiting to see if the iPhone can do what the printing press did for religion and democracy. तो ये सब थोड़े पॉजिटिव्स बताए हुए, सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, ये सब चीजों के लिए यूज करते हैं. कुछ नेगेटिव नेगेटिव चीजें बताई हुई है, नार्सिसिज्म, ट्रोल्स, पेशेंस कम हो गया है एंड डे ड्रीमिंग कम हो गया है. तो ये नेगेटिव्स बताए हुए हैं. ऑल्सो यहाँ पे बताया हुआ है कि उतना इम्पैक्ट तो नहीं था जितना गुटेनबर्ग प्रेस का था, ठीक है. इट्स हार्ड टू इमेजिन द फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस विदाउट दोज एनलाइटन वॉइसेस इन प्रिंट. तो मुझे अभी तो मतलब अगर मैं आईफोन को देखूं तो आई कांट इवन इमेजिन कि वो कैसे होता रेवोल्यूशन अगर मेरे पास प्रिंटेड मटेरियल नहीं होता तो. नॉट लॉन्ग आफ्टर स्टीव जॉब्स अनाउंस्ड हिज आईफोन ही सेड दैट बाउंड बुक वाज प्रोबेबली हेडेड फॉर हिस्ट्रीज एटिक. सो बुक प्रोबेबली मतलब अगेन इट डिस्क्राइब्स, सर्टनली तो नहीं हो रहा बट प्रोबेबली मोस्टली तो ये हो गया दैट हिस्ट्री के एटिक में चला जाएगा. एटिक इज बेसिकली सम रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस जहां पे जनरली स्टोर सम स्टफ, जो अनवांटेड यूज्ड स्टफ जो है वहां पे वो स्टोर करते हैं, ठीक है. तो बाउंड बुक जो है वो हिस्ट्री के एटिक में चला जाएगा. दैट इज बेसिकली व्हाट स्टीव जॉब्स हैड थॉट. Not so fast. Again, not so fast is a phrase that the author is countering Steve Jobs with. After a period of rapid growth in ebooks, तो ebook बहुत सारे fast बढ़े पहले, something closer to the medium for Chaucer's volumes has made a great comeback. Again, comeback है तो comeback is important. अब वो Chaucer कौन था, उसके volumes क्या है, doesn't matter. The hope of the iPhone and the internet in general was that it would free people in closed societies. So that was the hope. ठीक है. But क्या हो गया? But again, something opposite to that has happened. Failure of the Arab Spring. Again, I don't know what Arab Spring is. It's perfectly okay. छोड़ दो. And the continued suppression of ideas in North Korea, China and Iran. Right? So Arab Spring, North Korea, China, Iran, ये सब negatives बताए गए जिनको अभी भी iPhone influence नहीं कर पा रहा. ठीक है. It was certainly one of the most important, world-changing and successful products in history. तो product था वो, right? But I am not sure if the world changed for the better with the iPhone, as it did with the printing press, or merely changed. तो या सिर्फ change हुआ है, थोड़ा सा ही change हुआ है. So the author basically is not in favor of the iPhone being a revolutionary product. He is not subscribing to the idea that iPhone ने बहुत बड़ा revolution create किया है या help कर रहा है free speech वगैरह को encourage करने में, suppression of ideas के against जाने में. तो ये सब तो नहीं कर रहा. ऊपर से there are some negatives that are there, that people have become narcissistic. There are trolls that are there. Creativity, patience कम हो गया है, and daydreaming का art lost हो गया है. ठीक है. So again, we know what the context is here in this particular passage. And again, you need not remember everything that was mentioned. मेरे को आधी चीजें याद भी नहीं शायद passage में क्या थी. But एक more or less idea आ गया. Now let's look at the first question, seventh question in the test. The printing press has been likened to the internet for which one of the following reasons? तो printing press को internet के साथ क्यों liken किया गया है? ठीक है. So again, if you look at it, the first thing that was there, yeah. सो प्रिंटिंग प्रेस को दिस वाज द इंटरनेट ऑफ दिस थिंग इट्स डे. ठीक है. अब वो क्यों क्या था, तो यहाँ पे ये सब ज्ञान 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 दिया हुआ है. तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाला क्या आता है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इट यूज टू टेक मोर देन 4 months अप टू ईयर टू प्रोड्यूस अ सिंगल बुक, ये सब था. बट फिर बुक बहुत जल्दी उनके डेवलप होना स्टार्ट हो गए. ठीक है. और यहाँ पे क्या आ गया, मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट आने लग गया, मैप्स बहुत फास्ट आने लग गए. तो फ्रीली एंड क्विकली इज द क्लू. तो यहाँ पे लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. तो बेसिकली इंटरनेट कैसे फास्ट स्प्रेड करता है चीजों को, वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेड हो गया इंफॉर्मेशन. दैट इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. So the printing press has been likened to the internet for which one of the following reasons? It enabled rapid access to new information and the sharing of new ideas. Perfect, very nice. New information जल्दी जल्दी जाएगा, new ideas जल्दी जल्दी शेयर होंगे जैसे इंटरनेट पे होते हैं. It represented new and revolutionary technology compared to the past. ओके. तो पास्ट में टेक्नोलॉजी से ये टेक्नोलॉजी बेटर है, अग्री. बट ऐसा नहीं है कि मतलब इंटरनेट वाज अ न्यू एंड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द पास्ट एंड प्रिंटिंग प्रेस वाज आल्सो अ न्यू एंड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द पास्ट. इट्स लाइक सेइंग दैट पीपल कुड रीड, राइट? बट दैट्स अ वेरी सुपरफिशियल वे ऑफ सेइंग थिंग्स. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर देखा जाए ना, ऑप्शन ए इज मच मोर इंपैक्टफुल क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ न्यू आइडियाज ये एग्जैक्ट चीजें बता रहा है जो पैराग्राफ में बताई हुई है. जबकि सेकंड वाला बोल रहा है कि हाँ न्यू था और रेवोल्यूशनरी था. इट्स नॉट एज सुपरफिशियल एज. सो ऑप्शन बी इज वीकर देन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली बेटर अभी तक. इट एनकरेज रीडिंग अमंग पीपल बाय गिविंग देम एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ बुक्स. अब इंटरनेट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, दैट इज द मेन थिंग. वो तो नहीं बोल रहे हैं. वो तो बोल रहे हैं कि भाई प्रिंटिंग प्रेस जो था वो पहले आया था, तो प्रिंटिंग प्रेस ने जो किया वो इंटरनेट करेगा, मोर और लेस वो एक्सपेक्टेशन था. सो नाउ वी आर बेसिकली सेइंग दैट the printing press that you had back then
that allowed a lot of information to be spread to a lot of people. ये हमने allow किया लोगों तक पहुंचाने के लिए, right? So that was what we did. Now because of that revolutions happened, because of that medical के quacks सब चले गए, because of that जो clerics थे, clergy जो था, उनके हाथ से monopoly चली गई religion की, ये सब चीजें हुई हैं। सिर्फ बुक रीडिंग की तो बात नहीं है उसके अंदर। सो इट एनकरेज रीडिंग अमंग पीपल, तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं बोल सकते। रीडिंग शायद लोगों को पहले भी अच्छा लगता था, राइट? बट ये फास्टर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए काम है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट राइट। ऑप्शन डी, इट गिव पीपल एक्सेस टू पैम्फलेट्स एंड लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेजेस। अगेन वेरी सुपरफिशियल रीजन। यहाँ पे किधर हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अरे मतलब मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से स्प्रेड होना चालू हो गई, रिलीजन पे बहुत लोगों का मतलब बहुत लोगों को स्प्रेड हुआ रिलीजन, ये सब चीजें बात कर रहे हैं। और इधर क्या बोल रहे हैं, पैम्फलेट एंड लिटरेचर हम सेवरल लैंग्वेजेस में दे सकते थे, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस इंटरनेट ऐसे हो नहीं। इनफैक्ट इंटरनेट से हम पैम्फलेट नहीं दे सकते इतना जल्दी जल्दी, इट्स स्टिल प्रिंटिंग ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पर से, राइट? सो ऑप्शन डी इज अगेन अ वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंटिंग प्रेस was similar to the internet because it enabled rapid access to new information and sharing of new ideas. So that's why A is the correct answer to the first question. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट एंड ऑल ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस करेक्टली। In fact, seventh was also one of those moderate-ish questions that some 40% of you I think got right. So I have not really put the statistics here for this particular. ठीक है, let's go to the next one. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस डिड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। मेडिकल इंफॉर्मेशन अच्छे से चली गई, क्लर्जी के पास बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन चली गई, रेवोल्यूशंस हुए बहुत सारे, बुक्स जल्दी जल्दी प्रिंट होना चालू हो गए, तो ऑल दोस थिंग्स वर देयर। सो ऑप्शन ए, promoted the spread of enlightened political views across countries. Yes, more or less you can say कि political views बहुत जल्दी जल्दी spread हो गए, that's why American Revolution हुआ, that's why French Revolution हुआ, तो we can say that. Second, gave people direct access to authentic medical information and religious texts. Perfectly done. मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गया इसलिए वो क्वैक्स सब चले गए ना, एंड रिलीजियस टेक्स्ट से मोनोपोली निकल गई ऑफ द क्लेरिक्स, राइट? सो ऑप्शन बी इज आल्सो राइट, प्रिंटिंग प्रेस डिड दिस। थर्ड, शॉर्टन द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस बुक्स एंड पैम्फलेट्स। ऑफ कोर्स यस, पहले तो दिया हम लोगों ने कि 4 मंथ्स को बैठ के 1 साल तक कुछ करना पड़ता, तब जाके वो कितने तो पेजेस करते हैं, बट अभी तो मतलब 4000 पेजेस इन अ डे जो भी है, मतलब सो इट शॉर्टन द टाइम, सो दैट इज आल्सो ट्रू। एंड फोर्थ, enabled people to perform various tasks simultaneously. ये तो नहीं बोल सकते। You can say that because people are able to do things fast, they could do more things in the time that they had left over. ऐसा नहीं है कि बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस आ गया मैं एक साथ दो चीजें कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? आई कांट रीड टू थिंग्स एट वंस बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस आ गया है। सो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से द अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट आई यूज्ड टू सिट एंड राइट अ बुक, लेट्स से, तो उसमें मेरे 8 घंटे जाते थे लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले, बट अभी मेरे 2 ही घंटे जाते हैं वहां पे। तो जो बचे हुए 6 घंटे में आई कैन डू अदर थिंग्स। मल्टीटास्किंग या डूइंग थिंग्स साइमल्टेनियसली इज नॉट समथिंग दैट हैज हैपेंड, डूइंग मोर थिंग्स माइट हैव हैपेंड। So it's a very tricky option, option D. Of course, the other three options were very obvious. इसलिए option D has been chosen by a lot of people. In fact, again, it was classified as easy. Some 60% of you got it right. But with better options, this could have been a tricky option. ठीक है? तो यहाँ पे simultaneously तो मैं नहीं बोल सकता, but people could do more things. Right? Let's move on to the next one. Question 9. Yeah. स्टीव जॉब्स प्रेडिक्टेड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द आईफोन। तो स्टीव जॉब्स ने ये सब में से क्या प्रेडिक्ट किया था? तो पहले ही बोला है कि भाई बुक्स जो होंगे वो एटिक में चले जाएंगे, बाउंड बुक्स जो होंगे वो सब एटिक बाउंड हो जाएंगे करके बोला हुआ है स्टीव जॉब्स ने। सो पीपल वुड स्विच फ्रॉम रीडिंग ऑन द इंटरनेट टू रीडिंग ऑन देयर आईफोन्स। ओके, पीपल वुड लूज इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल क्लासिक्स, ऐसे नहीं बोला है, ही जस्ट मेंशन बाउंड बुक्स, दैट्स इट, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, so B is not right. B is too specific. It's not just about historical and traditional classics, and not about losing interest in reading one genre. It's about the mode of reading that will change. Third, reading printing books will become a thing of the past. Okay, so C is also something which is fine. Printed books जो पढ़ेंगे ना वो thing of the past बनेंगे, which is perfectly right. Then the production of e-books would eventually fall. राइट, सो ई बुक्स गिर जाएंगे, वो तो नहीं बोला है। इनफैक्ट वो ई बुक्स वाला पार्ट ऑथर ने ऐड किया है टू से दैट जो ई बुक्स है उनका पहले तो मतलब एक अपस्विंग आया था, बट नाउ इट हैज प्लेटो, ये बताया गया है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट राइट। सो ए और सी में से कुछ तो आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब ए और सी में से क्या आंसर होगा? आईफोन पे, आईफोन होने से क्या होगा? स्टीव जॉब्स ने क्या बोला? पीपल वुड स्विच फ्रॉम रीडिंग ऑन द इंटरनेट, मतलब पहले मैं ऑनलाइन इंटरनेट पे पढ़ता था, अभी वो लोग आईफोन पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। स्टीव जॉब्स हैज सेड दैट फिजिकल बुक्स पढ़ने के जगह पे वो आईफोन पे बुक पढ़ना चालू करें। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑप्शन सी इज द बेटर ऑप्शन।
राइट? सो ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया हुआ है, रीडिंग प्रिंटेड बुक्स वुड बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग फॉर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो प्रिंटेड बुक से आईफोन पे स्विच होंगे, इंटरनेट से आईफोन पे स्विच नहीं। ऑलराइट, yeah, let's move on to the next one. If there are no doubts, we'll go to the next. ठीक है, so now the 10th question. I'm still waiting to see if the iPhone can do what the printing press did for religion and democracy. Right? So religion and democracy पे बहुत ज़्यादा impact of the printing press because it enabled people to share their thoughts, pamphlet distribution कर पाए वो लोग, and a lot of people could be encouraged to join that revolution जहाँ पे वो लोगों ने overthrow किया एक empire को, right? So all those things happened. I'm still waiting to see if iPhone can do what the printing press did for religion and democracy. ये बताया गया है. तो अनसर्टनिटी क्यों है, मतलब why is the author uncertain? Because the author has mentioned Arab Spring mention किया था, right? The author has mentioned authoritative regimes in North Korea, China, ये सब चीजें बताई हुई हैं, right? So यहाँ पे जो बताया हुआ है as a show ईरान में, right? So नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड ईरान जहाँ पे कंटिन्यूड सप्रेशन ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, अरब स्प्रिंग जो था वो फेल हो गया, तो इसकी वजह से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द ऑथर इज नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस अबाउट द sorry, yeah, about the utility of the iPhone compared to the printing press। ठीक है, तो rise of religious groups in many parts of the world, तो ये तो मतलब नहीं बोल रहे हम लोग, वी आर जस्ट सेइंग दैट बहुत सारी जगहों पे मतलब वो रेवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, सप्रेस हो रहा है, फ्री स्पीच सप्रेस हो रही है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सेकंड, एक्सपेंशन इन ट्रोलिंग एंड नार्सिसिज्म अमंग द यूज ऑफ द इंटरनेट। यस, इंटरनेट के वो तो नेगेटिव्स दिए हुए हैं, बट इसकी वजह से रिलीजन और डेमोक्रेसी वाला तो नहीं पाता था ना। सो ऑल द ऑप्शन बी इज ट्रू इन केस ऑफ द ऑथर्स टेक ऑन द आईफोन कि नार्सिसिज्म एंड ट्रोलिंग बढ़ा हुआ है करके, बट दैट डजंट मीन दैट उसकी वजह से इंटरनेट वो नहीं कर पा रहा जो प्रिंटिंग प्रेस ने डेमोक्रेसी और रिलीजन के लिए किया था। दैट इज ट्रू फॉर राइट, सो बी इज ऑल्सो नॉट राइट। The continued suppression of free speech in closed societies is brilliant. This is what we're looking at, right? So closed societies meaning North Korea, China, ईरान में जो दिया हुआ है वहां पे continued suppression of free speech हो रहा है, तो आईफोन आने के बाद भी ये suppression हो रहा है, उसको कम नहीं हो रहा है ये चीज, right? So this is basically what we are looking at. And option D, if you were to just look at it, the decline in reading habits among those who use the device. मतलब अगेन हम लोग रिलीजन और डेमोक्रेसी बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं, एंड ये रीडिंग हैबिट कहाँ से है, राइट? सो इट्स टू फ्लिम्सी अ थिंग कि रीडिंग हैबिट कम हो गया करके आईफोन इफेक्टिव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। द ब्लेम इज स्टिल ऑन द आईफोन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द ब्लेम इज नॉट ऑन द पीपल यूजिंग द आईफोन। सो ऑप्शन सी लुक्स टू बी द बेस्ट वन, जहां पे सप्रेस कर रहे हैं ऑल द कम्युनिटीज और द क्लोज कम्युनिटीज, क्लोज सोसाइटीज के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच suppress हो रही है, that is something that the iPhone has not been able to break through, which the printing press did during its time। ठीक है, so that is what we are looking at। Now let's look at question 11। The author attributes the French and American revolutions to the invention of the printing press because, so French and American revolutions printing press के वजह से हुए थे। ये क्यों हुआ था, ये क्यों मतलब ऑथर उसको ये कर रहा है? बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ the efficiency of the printing press, people are able to convey their ideas and reach out to a lot of people जल्दी जल्दी से, पैम्फलेट बना के या जो भी करके वो लोग बहुत जल्दी जल्दी से लोगों के पास जा सकते थे, and that's why it has been attributed to the printing press, right? So first, maps enable large number of Europeans to travel and settle in the American continent. No, map is true, but map की वजह से French and American Revolution नहीं आए थे। So if you look at the first paragraph, this one, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Before long, average people could travel to places, तो travel कर सकते थे for leisure, for their enjoyment with maps। बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि भाई ये मैप्स की वजह से अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो तो नहीं बोला है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है स्टर्ड बाय पैम्फलेट्स फ्रॉम अ वर्जन ऑफ दैट सेम प्रेस अमेरिकन कॉलोनीज रोज अप अगेंस्ट अ किंग। ठीक है, तो ये बोला हुआ है, तो यहाँ पे यही चीज हमको देखनी है कि कहाँ पे ये दी हुई है। तो मैप तो डेफिनेटली इज नॉट द आंसर। द रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सपोज पीपल टू न्यू आइडियाज ऑन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। वेरी नाइस, रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन जा सकता था बिकॉज ऑफ पैम्फलेट्स, राइट? सो दैट इज बेसिकली ट्रू। थर्ड ऑप्शन, it encouraged religious freedom among the people by destroying the all right, yeah, sorry, it encouraged religious freedom from among the people by destroying the monopoly of religious leaders on the scriptures। Again it's true, but उसकी वजह से फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं हुए थे। इट मेड रिलीजन मोर एक्सेसिबल टू पीपल, उसकी वजह से रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। लास्ट, इट मेड अवेलेबल रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज एंड ओपिनियंस टू द पीपल। नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी और डी जो है ना बहुत क्लोज ऑप्शन है इन अ वे। बी बोलता है द रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपोज पीपल टू न्यू आइडियाज ऑन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी।
ठीक है। डी बोलता है रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी एंड ओपिनियंस लोगों तक पहुंच गए। अब पैम्फलेट के अंदर रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी जाएगी क्या वहां पे, ओपिनियंस जाएंगे क्या लोगों तक, जाएंगे, यस। बट बी, व्हाई इज प्रिंटिंग प्रेस इंपॉर्टेंट? रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी एंड ओपिनियन तो बहुत तरीके से लोगों के पास जा सकते थे, राइट? इफ आई वर अ लीडर आई कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई कुड डिलीवर अ स्पीच एंड आई कुड से दैट बिकॉज ऑफ दैट माय दिस थिंग इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इज व्हाट आई कुड हैव सेड। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, या सो आई एम सेइंग दैट यहाँ पे रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी तो ऐसी भी आ सकती थी, आई कुड स्टैंड एंड गिव अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड देन पीपल वुड बी इंपैक्टेड, पीपल वुड कम टू नो माय स्ट्रैटेजी एंड माय ओपिनियंस। तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आया यहाँ पे? प्रिंटिंग प्रेस मेड द एंटायर प्रोसेस फास्टर, राइट, रैपिड। तो यहाँ पे जो बी के अंदर जो वर्ड दिया ना रैपिड, दिस इज द की वर्ड। तो जैसे ही मैं ये रैपिड वर्ड देखता हूँ दैट मेक्स माय आंसर मोर इम्पैक्टफुल एंड दैट इज व्हाई आई विल से बी इज द करेक्ट आंसर इंस्टेड ऑफ डी। डी के अंदर रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी और ओपिनियन को अवेलेबल बनाया, बट प्रिंटिंग प्रेस डिड नॉट मेक इट अवेलेबल टू द पीपल। It could have been made available in other ways as well, but rapid spread of information was purely because of the printing press, and that is why option B is the right answer for this. Okay. Now let's look at the last question. Yeah. The main conclusion of the passage is that the new technology has done what? So new technology has basically done nothing more or less. Printing press के हिसाब से तो मतलब बिल्कुल ही comparable नहीं है. So definitely can't really attribute anything to the new technology. So the main conclusion is that the new technology has some advantages, but these are outweighed by its disadvantages. ठीक है, तो अब यहाँ पे again you can say that this is partially true because some advantages तो बोले गए हैं that जो चार चीजें लिखी गई थी that people are able to consume it for work, dining, travel and socializing। ठीक है, तो यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज तो किया है वर्क, डाइनिंग, ट्रैवल एंड सोशलाइजिंग, ये चार चीजें तो रेवोल्यूशनाइज की हैं, बट ओवरऑल देयर haven't been a lot of impactful things that has happened। ठीक है, but these are outweighed by its disadvantages according to the author, yes। बट मेन कंक्लूजन क्या ये है? सो लेट्स पार्क दिस असाइड, दिस इज अ सेमी करेक्ट आंसर, आई एम ओके विद दिस आंसर, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं। सो फार नॉट प्रूव्ड एज सक्सेसफुल एज द प्रिंटिंग प्रेस इन ओपनिंग पीपल्स माइंड्स। नाउ वन और टू के बीच में डिफरेंस क्या है? बी के अंदर ना एक बहुत अच्छा फ्रेज यहाँ पे दिया गया है, समथिंग दैट आई लाइक, इट्स कॉल्ड सो फार एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार मतलब एक एक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू द ठीक है, तो सो फार कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ this particular passage, it has been talking about this one, yeah, this is very important। तो यहाँ पे बोला गया है that the iPhone is still young, it has certainly been one of the most important whatever products in history as Tim Cook said, but still young is very important। तो ऐसा नहीं है कि 500 साल हो गए एंड मैंने पक्का बोल दिया कि भाई उसके डिसएडवांटेजेस आर वर्स देन इट्स एडवांटेजेस, ऐसा नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन वन एंड टू। ऑप्शन वन इज फेयरली राइट, इट्स नॉट रॉन्ग, बट बी बोलता है कि अभी तक इट हैज नॉट प्रूव सक्सेसफुल, कल को हो सकता है, यू नेवर नो, राइट? So far has not proved as successful as the printing press in opening people's minds। Brilliant, this is a much better answer than the first option। तो अभी तक तो मतलब this is winning, this I will not go for at this point। ऑप्शन सी देखते हैं। हैज बीन डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट हैज चेंज्ड सोसाइटी टू रैपिडली, नॉट रियली, राइट? तो यहाँ पे चेंज सोसाइटी टू रैपिडली की वजह से डिसअपॉइंटिंग नहीं है वो। ये वाला इज बेटर, प्रिंटिंग प्रेस के हिसाब से इट हैज नॉट बीन एबल टू रेवोल्यूशनाइज समथिंग एंड दैट समथिंग। ऑथर का मेन प्रॉब्लम ये है कि आईफोन की वजह से जो क्लोज सोसाइटी से वहां पे फ्री स्पीच एनकरेज नहीं हो पा रही है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे चेंज सोसाइटी टू रैपिडली तो नहीं बोल सकते, ठीक है? दैट इज नॉट द मेजर डिसअपॉइंटमेंट और द मेजर कंक्लूजन, मेन कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज तो वो नहीं। लास्ट, has been more wasteful than the printing press because people spend more time daydreaming or surfing। No, in fact उल्टा हो रहा है ना, because of new technology people have lost the art of daydreaming, ये बोला गया है। तो more time daydreaming में कैसे spend करेंगे? ठीक है, so this is definitely wrong। so B और A और B में अगर देखेंगे तो B is more प्रॉपर सो टू से, ठीक है? एक इसके अंदर बोला गया कि एडवांटेजेस हैं बट ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, बट बी के अंदर बोला है अभी तक ऐसा सिचुएशन है एंड दैट इज प्योरली बिकॉज पीपल्स माइंड्स हैव नॉट बीन ओपन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेंशन, राइट? सो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, सो दैट वाज बेसिकली द टेस्ट दैट वी डिड टुडे। If you have any doubts, let me know in the comment section in the chat, and I'll try to cover it right now. And agar baad mein if you take the test, if you're looking at this recording, do comment in the section below, and I'll be more than happy to address your queries.
If you have any doubts in terms of any question, do let me know. I'll try to answer it to the best of my ability and try to convince you why that answer was the right answer. But see, verbal ability and reading comprehension, के अंदर ना one thing is very very important. You have to discuss answers. The whole point that I did RC upfront because I wanted you to get into the habit of discussing RC questions because बहुत सारे लोग वो नहीं करते. In fact, whatever groups you are a part of, right? You would be a part of a lot of Telegram groups, WhatsApp groups, Facebook groups, इंस्टा हैंडल्स फॉलो कर रहे होगे, यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रहे होगे, बहुत सारी जगह पे आरसी का डिस्कशन एनकरेज ही नहीं करते, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल कि भाई ये आंसर राइट क्यों है करके, और एक्सेप्ट दैट सम आंसर इज रॉन्ग, राइट? तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है टू कन्विंस पीपल, एंड पीपल ऑल्सो डोंट आस्क डाउट्स बिकॉज वो सीरियसनेस नहीं आता इन टर्म्स ऑफ आरसी, इन टर्म्स ऑफ क्वांट, ठीक है? एंड दिस हैज बीन माय पर्सनल ग्राइप सिंस अ लॉन्ग टाइम दैट पीपल unknowingly think that RCs are very easy, and that's why they don't do it properly, and then they lose out on easy marks during the test as well. It's very unfortunate, but people do that. Okay, so we will try to change that now, and we will try to discuss more RCs as we progress as well. You also have to take a step from your side and ensure that you are studying RCs on a daily basis and coming back to me with questions कि अच्छा ये क्वेश्चन आपने ऐसे क्यों सॉल्व किया, ये एक अगर थोड़ा सा डिबेट होता है ना बैक एंड फोर्थ, दैट माय थॉट प्रोसेस वाज दिस and that's why I thought that B was the right answer. But आप बोल रहे हो C right answer है करके. See, we can disagree at some point in time. We will have to say कि अच्छा ठीक है, we have to agree to disagree. But at least the discussion ना that will help you solve questions in a better manner. So please do that. And yeah, I think the session, I hope the session was helpful to you. Do turn up for another session tomorrow. So tomorrow we will have a session on arithmetic. So the test will be live in the morning. It's the same portal. We have put the link to the portal in the description box below. So you can sign up to that portal, and you can just create an ID, and you can start taking these tests. Okay? So it's recommended that you take the arithmetic test tomorrow in the morning, and in the evening we will sit and discuss. We have 10 questions again from past CAT papers. So make sure that you solve it and you turn up for the class tomorrow as well. And as I mentioned earlier, we will be continuing the session throughout the CAT season. And this will go on from Monday till Friday. So we have it during the days of the week. And for weekends, we can plan something else also. So the strategy sessions, motivation sessions that some people ask, those we can definitely do on during the weekends. Okay? So we will keep on coming up with fresh content for all of you, and I hope all of you enjoy whatever we are doing. Okay? So thank you everyone for turning up. It was really nice seeing so many of you for the first live stream of this channel. So thank you so much for turning up, and yeah, I'll see you again tomorrow for another session. And if there's anything that you need help with, please put it in the comment section below, and I'll be more than happy to get back to you with the answers. Okay? And do stay subscribed to this channel. It gives us a lot of motivation, confidence to do more things, to try out more things, and help all of you succeed at the CAT. So that is something that I would strongly urge all of you to do. अगर ये channel पसंद आता है तो definitely share it with all of your friends so that there are more people and we have more fruitful discussions. And yeah, I'll see you again tomorrow. Thank you everyone. Good evening everyone, and have a great इवनिंग अहेड ऑफ यू. ठीक है, चलो, ऑल राइट.